Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. And today, we have some really incredible news right off the bat. Oh, yeah. Banu Mushtaq's Heartlands Selected Stories, translated by Deepa Bhasthi, has just won the International Booker Prize. Wow, that's huge. Monumental, really. Yeah. It's the first time ever a book translated from Canada, spoken by maybe 65 million people. Incredible read. It's even been nominated, let alone won. And Deepa Bhasthi, she's the first Indian translator to win the International Book. It's just fantastic news. And, these are the very stories we're actually diving into today. Perfect timing, then. Exactly. We've got excerpts from this now award-winning book, specific stories like Stone Slabs for Shaista Mahal, The Shroud, The Arabic Teacher and Gobi Manchuri, Be a Woman Once, O Lord, and High-Heeled Shoe. And that brilliant translator's note against italics. Yes, that too. And the prize ceremony, just for context, was held in London. And it's worth remembering, this English collection gathers 12 stories written over, 3 decades? It really gives these intimate looks into the lives of ordinary Muslim women in South India. So our mission for this deep dive is, to really uncover the insights, the characters, the cultural nuances that are packed into these specific pages you've shared with us, guided by Banu Mushtaq's amazing voice and, of course, Deepa Bhasthi's translation. Let's do it. Let's unpack this set of sources. So maybe starting with the basics, the foundation the material gives us. The book itself, the English version, published in 2025 by and other stories. Right. We get the copyright info, Banu Mushtaq for the stories, Banu Bhasthi for the translation, and there's a whole team listed, editor, Tar Tobler, copy editor, proofreader. People who make it happen. Exactly. Typesetting, cover design, and they acknowledge support from Arts Council England, which is important. And it's interesting, isn't it? The English book is 2025, but the stories themselves were originally published in Kannada collections way back in 2013, and then more recently in 2023. Yeah, it shows the long life these stories have had, the enduring power of her writing over time. Absolutely. Knowing those details kind of grounds the work, doesn't it? Shows its journey from the original Kannada over years to this curated collection, translated, brought to a global audience. Team effort. Okay, so let's get right into the heart of it then, the stories. Starting with Stone Slabs for Shaista Mahal. Okay. Straight away, that narrator's voice just grabs you. There's the relatable stuff, city life versus rural life. But then she goes deeper. Her thoughts on different words for husband. Oh, yeah, that part is fascinating. Yeah. She lists them. Home person, office person, Yajamana, Ganda, Pati. And her reaction to Yajamana, it's instant. She completely rejects it. Says it makes her feel like an animal or a dog, owner-servant vibes, totally unacceptable for her, an educated woman. And that's such a key insight right there in her internal thoughts, how language itself can carry these heavy patriarchal expectations, and her refusal to just accept that. That refusal is crucial. The text points out this expectation, apparently common across communities, that the wife is the husband's most obedient servant, his bonded laborer. Ugh. There's even that really intense image she recalls a wife licking her husband's pus-filled wounds clean and still not considered dutiful enough. The narrator's like, nope, not for me. Yeah, she makes that crystal clear. Aye. And the setting, the Krishnaraja Sagara Dam Project. Yeah. It's quite a grand, natural backdrop for these really complex domestic thoughts. It is. And then we meet Shaista and Iftikhar. Their dynamic is interesting. He's making these very public, over-the-top declarations of love. Which the narrator finds kind of funny. Right. While Shaista just sort of accepts them with this amused, almost knowing look. But then Mujahid, the narrator's husband, chimes in with a different take. Mm-hmm. He basically says Iftikhar just needs the company of women. Doesn't matter if it's Shaista or Nargis or Merun. Adds that layer of sort of practical reality underneath the romance, doesn't it? Definitely. And we also see Asifa, the stepdaughter, who's described as the one running the household, managing the kids. Shaista even calls her mother. Hints at those complex, demanding roles women often have in extended families. Then the conversation shifts to family planning. The narrator mentions getting the tubectomy operation to stop having kids. She references her mother's side, where several women did it after 2 or 3 children. And Shaista seems interested, right? Wants the narrator to go with her for support. Yeah. But then comes this really striking contrast. After Shaista gives birth, the expectation is she leaves the maternity home super quickly. Asifa's handling everything. Shaista says she's a bit weak, but plans to get the operation done in maybe 15 days. But then, bam,
The narrator sees her just a short while later, already traveling at the train station, looking like her old vivaciousness is back. And Shaista says she never stays in confinement more than 15 days. Just keeps warm. Which is so different from what the narrator describes seeing in her own family, that traditional confinement. 3 months in bed. Strict diet, 10 blankets, wiping away sweat or bad water, then looking like a bride after 40 days. And the grandmother complaining about daughters-in-law who don't do the long confinement anymore, comparing them unfavorably. That contrast really highlights the tension, doesn't it, between tradition and individual choices, or maybe just the practical need to get back to life quickly. Shaista's quick return is a whole different approach. Okay, moving to the shroud. The opening idea blaming Shaitan, the devil, for sleeping in and missing dawn prayers. It's framed almost affectionately, isn't it? Like he's your personal servant, making you too comfy to get up. A bit of humor around religious duty, maybe. Yeah, a very human touch. But the real core here is the Hajj pilgrimage. The source goes into the preparations. Asking forgiveness, that kahasuna thing from everyone, relatives, friends, the feasts before leaving. It really underlines how community-focused it is, getting things right before this major spiritual journey. And then you have that key interaction with Yasin Bua. She makes a very specific request. The shroud, the kafan, brought back from Hajj. But the narrator, Shazia, comes back loaded with gifts. Zamzam water, dates, prayer mats, beads, just overwhelmed by it all. And she gives Bua a prayer mat and beads, thinking, that's a good gift. But Boo is having none of it. I don't want these. Give me my kafan. Shazia gets angry, tells her off for refusing a prayer mat, but Bua's response is powerful. She still uses the prayer mat her mother-in-law brought back years ago. Her focus is entirely on the end of life. That line, society's telling me to go and the forest is calling me to come and retire. Just wow. So later, when the narrator hears Bua died, that unfulfilled promise of the shroud just hangs over her. It becomes this huge weight. Yeah, it really speaks to the burden of those traditional obligations tied to Hajj gifts, especially one requested for death, and the lasting impact when expectations aren't met. Let's talk about the Arabic teacher in Gobi Manchuri. Here, the narrator is a lawyer, balancing her job and her family, her daughters Azia and Amina. She needs an Arabic teacher for them. And the teacher's profile is very specific. Young guy from Uttar Pradesh, Hafiz Quran. He's memorized the whole Quran. And his way of communicating, avoiding eye contact with women, looking at the wall or floor, practicing a kind of purdah for men. Right, as a sign of modesty or piety in that context. And the fee is 500 rupees a month. Pretty standard detail. But then the story takes this completely unexpected turn, Gobi Manchuri. The junk food. The cook gives him this made-up recipe. And the teacher gets this, crazy passion for it. He needs it to satisfy some unfulfilled desire. The daughters even help him hatch a plan. The climax is when the narrator walks in. His panicked reaction. And her first thought is relief. Relief that it was just about the food, not something untoward. That says so much, doesn't it? That immediate fear of gossip, scandal, what the relatives would say, the pressure to maintain appearances. Totally. That fear is so telling. Then later she hears he's looking for a bride. And the potential mother-in-law comes to her, the lawyer, for advice. Because the teacher has this bizarre wedding demand. Gobi curry or Gobi Manchuri for the wedding feast. And the mother's like, you meet such crack people a lot in your job. Bit of dark humor there. The lawyer thinks about maybe calling Imad, maybe intervening somehow, but decides against it, knows it's not her place. Right, crossing a boundary. Then, 6 months later, Imad shows up with the traditional post-wedding gift states, almonds, rock sugar, confirms the teacher actually got married, weird request and all. He even says your teacher remembered you both during the wedding chaos. And the narrator just feels this little moment of relief, amusement, laughs to herself, feels a little lighter. It's such a clever story, weaving together professional life, home life, cultural norms, anxieties, and this really quirky food obsession. Okay, now for Be a Woman Once, O Lord. The tone shifts dramatically here. It feels incredibly raw, intensely personal, maybe autobiographical. It really feels that way. The description of leaving her mother's house, feeling her heart ripped out, seeing her mother's silent pain like a saw running wildly over her innards, it's visceral. And the contrast with the husband is immediate and brutal. Right away, demanding money, 50,000 rupees, treating her like costume jewelry, a beggar. She feels totally reduced, just there to have children plowed, he sowed, even though she's got a shattered heart and fatigue-filled soul. In his words,
I am the one raising them. What is your problem in bearing them? Just cruel. Devastating. The text even points out the different value put on sons versus daughters. Satisfaction in having a son who can be proudly in full arrogance of being male, while the daughter's fate is uncertain, vulnerable. She sees herself as a dutiful servant, free labor, nameless, less than a person, just a shadow. And that fear of being nothing without his protection really shows how trapped she feels. Then the hospital incident is just shocking. She has a tumor, needs surgery, and while she's recovering, He demands her mother's wedding chain. The gold her own mother had given her melted down. to give to his new wife, he's planning to remarry while she's literally lying there in the hospital. It's the ultimate betrayal. Total helplessness, her thoughts, do I rip off these glucose bottles? Just show her despair. She might lose everything, even the roof over her head, the four walls. And that final scene, being shut out, kids hungry, sleeping in a ditch, seeing him arrive with the new bride all dressed up in red, like a precious jewel. The contrast is just agony. Which leads to that incredibly powerful ending, that direct plea. Be a woman once, O Lord. Asking God to understand, to feel what it's like, not to be an inexperienced potter next time. Begging for empathy from the creator, who she feels maybe favored the male creation. It's gut-wrenching. Absolutely. Okay, finally, high-heeled shoe. This one brings in the theme of people returning from Saudi Arabia. Right, and all the stuff they bring back. Nappies, toothpaste, clothes, watches, suitcases, gold, and slippers. Lots of footwear. The narrator even says Nayaz Khan's horse of imagination struggles to describe it all. And the return of Mahbub Khan from Saudi sparks the central conflict. His brother, Nayaz Khan, has cut down their beloved mango tree. That tree meant so much to Arifa. Memories of her first pregnancy, feeding the baby under it, playing there as kids, her father teaching the Quran. Mahbub is heartbroken too, but it's this silent suffering, becoming a sea of tears himself. And Nayaz's action, probably driven by greed, creates this deep chasm between them. Silence makes it worse. We also meet Nasima, the co-sister, with her high-heeled shoes. Those shoes feel symbolic, don't they? Maybe modern status or just detachment from the family drama. Her subtle smile of relief when the brothers are fighting suggests she's maybe not too bothered by it, perhaps even benefits. Meanwhile, Arifa is suffering. Yeah, described as thin and feeble, pregnant, caught in the middle of this Cold War, dealing with Nasima's veiled taunts. She has this terrible cough, but her husband, Nayaz, doesn't really do anything about it. Mahbub sees her condition too, but he's held back. Ego, anger at his brother, maybe fear of his own wife, Nasima. But then the memory of the mango tree seems to break through. It cools the volcano within Mahbub. And that connection lets him finally speak kindly to Arifa. Why have you become like this, my dear? He shows concern, calls her husband useless for neglecting her, offers to take her to a doctor, dinner. It's a potential turning point. Nasima notices wakes with the start, puts on her high heels. She knows something's shifting. Nayaz sees it too, thinks maybe things can get back to normal. Anna is becoming normal. Which leads to that scene in the shoe shop. It's so poignant. Nayaz wants to buy Arifa the high-heeled shoes, puts her on this throne-like chair. But they just don't fit. Her feet are wide, heels cracked, dirt under the nails. A total mismatch with these fancy shoes. She's clearly uncomfortable, scared of the pointed heels. Prefers her husband's simple Hawaii chapels. The shoes are completely wrong for her reality. But in that moment, wearing them, feeling so awkward, she feels her unborn baby move. Yeah, connecting with the life coiled under several layers, despite all the physical and emotional weight she's carrying. That later mention of the child pleading from inside about the weight just adds to it. It's a powerful image of resilience amidst burden. So having touched on these incredible stories, let's bring in the translator's perspective. Deepa Bhasti's note, against italics. Yes, really crucial context here. She introduces Banu Mushtaq not just as a writer, but also as a journalist, lawyer, activist, and connects her work to the Kannada word Bandaya. Which means dissent, rebellion, protest. Exactly. Bhasti links Mushtaq's writing to the Bandaya Sahitya literary movement from the 70s and 80s. This was basically a pushback against literature dominated by, well, upper caste and mostly male-led writing. Urging marginalized groups, women, Dalits, minorities to tell their own stories in their own way. In their own dialects, the Kannada they spoke, not some standard or prestige dialect. Authenticity was key. And the specific setting matters too, Hassan, Madikeri. Described as compact small-town India with its own social feel and, as noted,
rightward political leanings. And Banu Mushtaq herself lives this multilingual reality Dakni at home, Kannada outside, which explains all the code switching in the stories, mixing Kannada, Urdu, Arabic, Dakni. The translator makes a great point that this kind of mixing languages is super common in India, right? Not necessarily linked to class or caste, unlike so many other things that determine privilege there. Yeah. And Bhasthi is also reflective about her own position, lapsed Hindu and an upper caste person translating a minority voice into our shared alien language, English, acknowledging the complexities there. She also talks about how Kannada oral storytelling influences Banu's style. Right. The way sentences might trail off, the mixing of tenses, the little soliloquies. It makes it feel so immediate, like someone's actually talking to you. That physical, almost musical performance of everyday speech where gestures, expressions, haba, and tone are just as important as the words. And knowing that helps understand her translation choices, like keeping the hyperbole, the repetition shining, to capture that oral feel. And crucially, keeping cultural things like kinship terms. Using Bhai Saheb for iftikhar isn't just a word. It welcomes Zinat into the family, shows respect, makes space, challenges individualism. Exactly. It carries so much social weight. And she notes how using a husband's name might be uncommon in some households, adding another layer of understanding relationships. The note also kindly thanks supporters like English PN and other Dory's team, and mentions earlier publications of some stories. It's such an invaluable note. It's not just how she translated, but why. It frames the stories in their literary and socio-political context. Really makes you appreciate the craft involved in bringing these voices across cultures. Okay, so let's try and bring this all together. Reflecting on these specific pieces from the source material, we definitely see some powerful themes coming through again and again. Absolutely. These intimate glimpses into the lives of Muslim women in South India across different situations, the lawyer, the engineer's wife, the woman struggling in her marriage, the one dealing with family property fights. We see the heavy weight of traditional expectations, marriage, motherhood, being a good wife, and that constant push and pull between what individuals want or need and what the family or community expects. Power dynamics are huge too, aren't they? Yeah. Within marriages, within families, control over money, emotional pressure, different standards for men and women regarding duty, health. And the stories really highlight how complex language and identity are in a place with so many languages spoken side by side. How code switching, how using specific terms of address reveals so much about relationships and culture. And then the translator's note just provides that perfect lens. It helps us understand why the stories feel so real, so specific. Explaining the Bandaya context, the oral tradition, the careful choices made in translation to keep those nuances. It really underlines how vital translation is. So thinking about you, the listener, what specific moments or details from these stories or from the translator's note really struck you? Did anything stand out? Maybe that resistance to being a bonded laborer, or the sadness of the unfulfilled shroud request, or the sheer oddity of the Gobi Manchuri demand. Or that incredibly raw plea from the hospital bed, "Be a woman once, O Lord," or the image of Arifa in those ill-fitting high heels. How do these specific moments deepen your understanding of what life might be like for ordinary people in this part of the world? Do these stories challenge any ideas you had, or maybe confirm some? These sources really offer these specific, sometimes surprising windows into lives full of hardship, yes, but also resilience, full of very particular cultural details, but also universal human feelings. They show so vividly how personal lives are just tangled up with family, community, tradition, and how tiny details, a name used, a favorite food, a tree, can unlock so much about cultural patterns and individual desires. So we've journeyed through these incredibly compelling excerpts from Banu Mushtaq's Heartland, selected stories, now amazingly an International Booker Prize winner exploring the lives she portrays and the careful craft Deepa Bhasthi used to bring them into English. Yeah, the sources really showed us characters wrestling with tradition, family, identity, the everyday stuff of their world, domestic tensions, community pressures, all painted with these very specific cultural and linguistic colors. And what's really striking is how, even just from these excerpts, you get such deep emotional landscapes, such complex social fabrics laid bare. Definitely. And if you connect that to the bigger picture, understanding the Bandaya movement, thinking about the translator's specific choices, it reminds you that every story, especially one crossing language and culture like this, is shaped by conscious decisions about voice, about language, about perspective. Which brings us to a final thought. Maybe something for you to mull over.
How does reading translated literature, stories like these that are so deeply rooted in specific places and ways of speaking, how does that broaden your understanding, not just of the world, but of the human experience itself? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। সাহিত্য জগতে একটা বেশ বড় খবর, তাই না? বানু মুশতাকের হার্টল্যান্ড। হ্যাঁ, একদম। আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার 2025 লন্ডনে ঘোষণাটা হলো। এটা তো বিরাট একটা ঘটনা, বিশেষ করে কন্নড় সাহিত্যের জন্য। অবশ্যই, মানে কন্নড় ভাষা থেকে অনুবাদ করা এই প্রথম কোনো বই যেটা বুকারের জন্য মনোনয়ন পেল। ভাবা যায়, প্রায় 65 মিলিয়ন মানুষ কথা বলেন এই ভাষায়। সত্যি 65 মিলিয়ন। আর অনুবাদক দীপা বাস্তি। হ্যাঁ, উনিও ইতিহাস তৈরি করলেন। প্রথম ভারতীয় অনুবাদক হিসেবে আন্তর্জাতিক বুকার জয়। এটাও কিন্তু কম বড় ব্যাপার না। না না, একেবারেই না। আচ্ছা, বইটা নিয়ে একটু শুনি। মানে হার্টল্যাম্পের মূল বিষয়টা কি? বইটা আসলে 12টা ছোট গল্পের সংকলন, দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মুসলিম মহিলাদের জীবন নিয়ে লেখা। ও, আর গল্পগুলো কিন্তু একদিনে লেখা নয়, গত প্রায় 3 দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। 3 দশক? তার মানে তো একটা লম্বা সময় ধরে লেখা। আচ্ছা, আজ আমরা তাহলে এই বইটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। এর পুরস্কার পাওয়া, ভেতরের কথা, সাহিত্যিক দিকটা, এই সব কিছু। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দেখুন, ইংরেজিতে বইটা এই 2025 সালেই প্রথম এলো, অ্যান্ড আদার স্টোরিজ থেকে। হ্যাঁ, কিন্তু কন্নড় ভাষায় গল্পগুলো আগেই বেরিয়েছিল, দুটো আলাদা সংকলনে। একটা 2013 সালে, হাসিনা মাথু ইথারা কাথেগালু। আচ্ছা। আর অন্যটা 2023-এ, হেন্ন হাদ্দিনা স্বয়ম্বার। বেশ, আপনি বলছিলেন দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মুসলিম মহিলাদের জীবন। এই সাধারণ জীবনের কোন দিকগুলো বিশেষভাবে এসেছে? মানে কি এমন আছে যা মন ছুঁয়ে যায়? দেখুন, শুধু দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা বলাটা উদ্দেশ্য নয়, বরং লেখক খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে এই মহিলারা কিভাবে ঐতিহ্যের চাপ, সমাজের বিধিনিষেধ, আবার নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা, এই সব কিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে চলেন। মানে এক ধরনের নীরব লড়াই। একদম, একটা নীরব কিন্তু খুব দৃঢ় বোঝাপড়া। তাদের আশা, তাদের সম্পর্কগুলো, সামাজিক বাধা, নিজেদের সম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, এই সব খুব জীবন্ত হয়ে উঠেছে গল্পগুলোতে। কোনো নির্দিষ্ট গল্পের কথা যদি বলেন? যেমন ধরুন স্টোন স্ল্যাবস ফর শায়েস্তা মহল গল্পটা। সেখানে জিনাতের ভাবনা, শায়েস্তার জীবন, বিবাহিত জীবনে একজন নারীর নিজস্ব জগৎ, তার পরিসর, এই নিয়ে প্রশ্নগুলো উঠে আসে। তার মানে চরিত্রগুলো শুধু পরিস্থিতির শিকার নয়, তাদের নিজেদের একটা জোরের জায়গা আছে। ঠিক তাই। যেমন আরিফা, পারিবারিক জটিলতার মধ্যে সে নিজের পথ খোঁজে। বা ধরুন সাকিনা, একজন বিধবা মহিলা, কিন্তু নিজের আত্মসম্মান নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। আশরাফের লড়াইটা আবার সন্তানের অধিকার নিয়ে। মেহেরুনের গল্পে আছে দাম্পত্য জীবনের সংঘাত, পরিবারে ফিরে আসার আকুতি। আবার বি আ ওমেন ওয়ান্স ও লর্ড গল্পে মাতৃত্ব আর দাম্পত্যের কঠিন বাস্তবতা। মানে চরিত্রগুলো খুব বাস্তব, বহুমাত্রিক। আর পুরুষ চরিত্রগুলো, তাদের ভূমিকা কেমন? পুরুষ চরিত্ররাও আছেন। মুতাওয়াল্লি সাহেব, ইফতিখার, ইউকুব, ইউসুফ। এদের মাধ্যমে শুধু পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নয়, লেখক আসলে সামাজিক রীতিনীতি, সম্পর্কের জটিলতাগুলোকেও তুলে ধরেছেন। মানে সরল ভালো খারাপের বাইরে গিয়ে লেখা। হ্যাঁ, মানে কোনো সহজ বিভাজন নেই। মানব সম্পর্কের যে ধূসর জায়গাগুলো, সেগুলোই বেশি করে এসেছে। আচ্ছা, এবার একটু ভাষা আর অনুবাদের কথায় আসি। এটা তো খুব জরুরি একটা দিক। অবশ্যই। অনুবাদক দীপা ভাস্থি নাকি তার নোটে লিখেছেন যে বানু মুশতাকের লেখার ধরনে কন্নড়, দাক্ষিণী, উর্দু, আরবির একটা মিশ্রণ আছে। এই ব্যাপারটা ইংরেজিতে আনা তো বেশ কঠিন হওয়ার কথা। অত্যন্ত কঠিন কাজ, কারণ এটা শুধু ভাষার মিশ্রণ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। মানে ধরুন কাউকে ভাই সাহেব বলে ডাকা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা শুধু একটা সম্বোধন তো নয়, এর মধ্যে ক্ষমতা, স্নেহ, সামাজিক অবস্থান, কত কিছু মিশে থাকে। অন্য ভাষায় এর পুরো ভাবটা আনা প্রায় অসম্ভব। তাহলে দীপা ভাস্থি কিভাবে করলেন কাজটা? উনি চেষ্টা করেছেন মূল লেখার নির্যাসটা ধরতে।
ইটালিক্স ব্যবহার না করে ভাষার এই স্বাভাবিক মিশ্রণটাকেই লেখার অংশ করে তুলেছেন। এখানেই তো অনুবাদকের মুনশিয়ানা, তাই না? ঠিক। আচ্ছা, এই লেখার সঙ্গে বান্দাইয়া সাহিত্য বা প্রতিবাদী সাহিত্যের একটা যোগ আছে বলছিলেন। হ্যাঁ, আছে। বানু মুশতাকের লেখা আসলে 70-এর দশকে কর্ণাটকে যে একটা প্রতিবাদী সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছিল তারই অংশ। সেটা ঠিক কিরকম ধারা ছিল? এই আন্দোলনটা মূলত দলিত, নারী আর সংখ্যালঘুদের অভিজ্ঞতা, তাদের নিজেদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের কেন্দ্রে আনতে চেয়েছিল। বানু মুশতাকের লেখায় সেই প্রান্তিক কণ্ঠস্বরটা খুব জোরালো। আর লেখার ভঙ্গিটা? ওন গল্প বলার ধরনে একটা কথ্য ভঙ্গি আছে, মানে পড়তে পড়তে মনে হয় লেখক যেন সরাসরি আপনার সঙ্গেই কথা বলছেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এই ভঙ্গিটাই লেখাগুলোকে এত জীবন্ত করে তোলে। তাহলে সব মিলিয়ে হার্টল্যাম্পের এই আন্তর্জাতিক বুকার জয়, এটা শুধু লেখক বা অনুবাদকের সাফল্য নয়। না, একেবারেই না। এটা কন্নড় সাহিত্যের জন্য, ভারতীয় অনুবাদের জন্য, আর বিশেষ করে নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সাহিত্যের জন্য একটা বিরাট স্বীকৃতি। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম মহিলাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে গেল। আলোচনাটা শেষ করার আগে একটা ভাবনা আসছে মনে। এই যে অনুবাদ সাহিত্য, এটা যেমন অন্য সংস্কৃতিকে জানার দরজা খুলে দেয়, তেমনি কি সেই সংস্কৃতির ভেতরের জটিলতা বা স্বাতন্ত্র্যকে কোথাও একটু সরল করে ফেলার ঝুঁকিও থাকে? সেটাও একটা ভাবার মতো প্রশ্ন। অথবা এটাও ভাবা যায়, আজকের এই দ্রুত বদলাতে থাকা পৃথিবীতে বানু মুশতাকের মতো লেখকদের প্রতিবাদী স্বরের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কতটুকু। এই প্রশ্নগুলো না হয় আমাদের শ্রোতাদের জন্য তোলা থাকলো। ঠিক, তারাও না হয় একটু ভাববেন এই নিয়ে। आज हम बात कर रहे हैं बानू मुश्ताक की कहानियों के संग्रह हार्टलैम्प पर। इसका कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम किताब नहीं है, इसने तो इतिहास रच दिया है। बिल्कुल। इसी संग्रह ने मतलब हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित 2025 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कन्नड़ से अनुवादित पहली किताब है जिसे ये सम्मान मिला। सोचिए, करीब 6.5 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं। सही कहा। और दीपा भस्ती वो पहली भारतीय अनुवादक बन गई हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। कमाल है। वाकई कमाल है। ये जीत कन्नड़ साहित्य और भारतीय अनुवादकों दोनों के लिए एक मील का पत्थर है। तो आज हमारे पास इसी संग्रह की कुछ कहानियों के अंश और अनुवादक की एक बहुत जरूरी टिप्पणी भी। हाँ, और ये कहानियां जो करीब 3 दशकों में लिखी गई हैं, दक्षिण भारत की आम मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर रोशनी डालती हैं। हाँ, जैसे स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल, हाई हील्ड शू, द श्राउड, इस तरह की कहानियां। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। और देखिए, अनुवादक दीपा भस्ती अपनी टिप्पणी अगेंस्ट इटैलिक्स में एक बहुत दिलचस्प बात बताती हैं। वो कहती हैं कि बानू मुश्ताक की कन्नड़ में ना दक्षिणी, उर्दू, अरबी के शब्द एकदम घुले मिले हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ भाषा का मिश्रण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उस रोजमर्रा की जीती जागती बहुभाषिकता को पकड़ता है जिसमें वो किरदार सांस लेते हैं, उनकी सांस्कृतिक सच्चाई को दिखाता है। ये दिलचस्प है। जैसे स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल में जीनत नाम का किरदार है, वो अपने पति के लिए पति, गंडा, यजमान जैसे पारंपरिक शब्द इस्तेमाल करने पर सवाल उठाती है। मुझे लगा ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये भाषा के जरिए जो सत्ता के समीकरण बनते हैं ना, जीनत की बेचैनी सीधे उन पर सवाल उठा रही है। हाँ, मतलब रिश्तों की परिभाषाओं पर ही सोच रही है वो। बिल्कुल। और कहानी में और भी रिश्ते हैं। शाइस्ता और इफ्तिखार का वो थोड़ा हट के प्यार, और जीनत और मुजाहिद के बीच वो आधुनिकता और परंपरा का खिंचाव, और वो बच्चे के जन्म के बाद का एकांतवास और शाइस्ता का मॉडर्न रवैया, वो टकराव भी साफ दिखता है। हाँ हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ कहती है। और ये रिश्तों की उलझन सिर्फ घर में नहीं, समुदाय में भी है। जैसे वो मुतवल्ली साहब वाली कहानियां हैं, शायद द श्राउड या वैसी कोई। हाँ, मुतवल्ली साहब वो समुदाय के मुखिया हैं, पर देखिए कैसे संपत्ति विवादों में फंसे हैं। जमीला, सकीना अक्का की मांगे, फिर वो धार्मिक मुद्दे जैसे हिंदू कब्रिस्तान में मुस्लिम को दफनाने का झगड़ा। और उनके अपने निजी संघर्ष भी तो हैं। पत्नी का ऑपरेशन करवाना है, बेटे याकूब की दूसरी शादी का मामला है, अशरफ की बेबसी है। हाँ, अशरफ की कहानी तो वाकई दिल दुखाती है। बीमार बच्चे के लिए अकेली लड़ रही है, न समुदाय से मदद न पति से। ये सब दिखाता है कि कैसे सामुदायिक जिम्मेदारी, धर्म के नियम
और इंसान की अपनी ज़रूरतें आपस में टकराती हैं। मुतवल्ली का किरदार वो शक्ति और लाचारी के बीच जैसे फंसा हुआ है। सामाजिक दबाव बहुत है। सही कहा। फिर एक और कहानी है, हाई हील्ड शू। उसमें 2 भाई हैं, नायज खान और महबूब खान। नायज विदेश से लौटा है और घर में तनाव साफ है। हाँ, वो प्रवासन का असर, बदलते रिश्तों का तनाव। और वो आम का पेड़ काट दिया जाता है। हाँ। आरिफा है, वो चुप रहती है, उसकी सेहत बिगड़ रही है, लगता है चीजें बदल रही हैं और शायद भौतिक चीजों का असर बढ़ रहा है। हाँ, और वो हाई हील शूज, हाँ। वो एक प्रतीक बन जाते हैं। किस चीज के? शायद खोई हुई जड़ों के सामने नई, थोड़ी असहज सी दिखने वाली महत्वाकांक्षाओं के। हाँ। आम का पेड़ जड़ों का प्रतीक है और जूते बाहरी दुनिया की चमक दमक और शायद उसके बोझ का भी। ये बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन एक आवाज है जो बहुत सीधी है, बहुत बेबाक। हाँ। बी अ वुमन वंस ओ लॉर्ड में। हाँ, वो तो सीधे दिल पर लगती है। एक औरत की पुकार है वो। शादी में उसका दमन, लगातार बच्चे पैदा करने का बोझ, अपनी पहचान खो देने का दर्द, सब कुछ कह देती है। और अंत में वो चीख, एक बार औरत बनो हे भगवान, वो हिलाकर रख देती है। ये पितृसत्ता पर बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। बिल्कुल, जहां औरत का अपने शरीर पर, अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। यहीं पर बानो मुश्ताक की बंडाई वाली भावना दिखती है। बंडाई मतलब कन्नड़ साहित्य की वो विद्रोही धारा जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। ये किरदार चुपचाप ही सही पर लड़ रहे हैं। और इतनी गंभीर कहानियों के बीच एक जिक्र आता है द अरेबिक टीचर एंड गोभी मंचूरियन का। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये थोड़ा हल्का फुल्का है। एक अरबी टीचर हैं जिन्हें गोभी मंचूरियन इतना पसंद है कि वो उसे बनाने के चक्कर में छात्राओं के साथ रसोई में पकड़े जाते हैं। ये तो मजेदार है। हाँ, ये संग्रह में एक अलग रंग डालता है। दिखाता है कि गंभीर मुद्दों के बीच भी ऐसी मानवीय इच्छाएं, छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं। और कभी कभी सांस्कृतिक उम्मीदों और निजी शौकों का ये टकराव बड़ा मजेदार हो सकता है। तो इन सब अंशों को मिलाकर देखें तो क्या लगता है, ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आम लोगों के अंदर की दुनिया का आईना है। उनकी उम्मीदें, उनकी निराशाएं, उनके खामोश संघर्ष, सब कुछ इनमें झलकता है। और अनुवादक की वो टिप्पणी याद दिलाती है कि भाषा और संस्कृति कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, इन कहानियों की ताकत उनकी सच्चाई में है, उस आम जीवन की परतों को खोलने में है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। वो बंदाई की रूह, वो खामोश विद्रोह इन किरदारों में महसूस होता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के आम समझन जाने वाले लोगों को सच में कितना जानते हैं। उनकी अनकही कहानियों में, उनके अंदर चल रहे संघर्षों में न जाने कितनी गहराइयां छिपी होंगी, है ना? ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 2025ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾನು ಮುಷ್ಟಾಕ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೃತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅನುವಾದಕಿ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಅನುವಾದಕರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಥೆಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಕಥೆಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಗಳು. ಹೌದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣವೇ? ಆ ಕಥೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕಥೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ
ಏನು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರೋ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋರಾಟಗಳು, ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೈಸ್ತಾ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಕರೆಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಂತೆ ಕಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಬಂಧದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈಸ್ತಾಳ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಬಿ ಎ ವುಮನ್ ಒನ್ಸ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ, ಅದು ಓದುವಾಗ ಒಂಥರ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಅನುಭವಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿ ಶ್ರೌಡ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಜಿಯಾ ಹಜ್ನಿಂದ ತಂದ ಕಫನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಒಂದು ಆ ಸಂಕಟ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರೇಬಿಕ್ ಟೀಚರ್ಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ, ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ಶೂ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವಿನ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆರಿಫಾಳ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಒಳಗಿನ ನೋಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುವಾದಿಕಿ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿಯವರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾನು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಒಂಥರ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಸ್ತಿಯವರು ವಿವರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಭಾನು ಅವರ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ದಕ್ಕನಿ, ಉರ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಸಮುದಾಯದ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಶೈಲಿ. ನಿಜ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಾಗ ಆ ಭಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತೂಕ ಇದೆ, ಗೌರವ ಇದೆ. ಹೌದು. ಭಾಸ್ತಿಯವರು ಹಾಳೋದು ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪದ, ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಅನಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಕತೆಗಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬುಕ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ. ಎರಡನೇದು, ಇದುವರೆಗೂ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ. ಬಾನು ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿಗಳು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿಸ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾನು ಮುಷ್ಟಕ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ದೀಪಾ ಭಾತಿ ಅವರ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು? ಇಂತಹ ಅಪ್ಪಟವಾದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೊಗಡಿನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಥೆಗಳು ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಖುಷಿಗಳು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂಥ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಅರಿಯೋದೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕೇಳುಗರಿಗೂ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.